just for a vote. We started waves and we discussed it as a phenomenon which transfers energy without transporting matter. Energy without transporting medium. That is, if I throw a pebble into a water, we'll see the circles forming out. The pebble would stay here, but it would exchange their energy to the neighboring particles. So such a phenomena is known as wave. Wave travels in the form of wavefronts. The circles that you see in the water, they are known as wavefronts. So each circle is known as wavefront, and distance between two wavefronts is one wavelength. In order to define wavefront, we say it as imaginary surface on which each particle is moving with same phase of vibration. Now, what does this mean? It means that if I consider this circle, each particle on this circle would be vibrating in a certain position. For sake, it's moving like this. They are moving like this. Obviously, they are forming a circle, so they must be moving in the same sort of phase, na? So the particle in front of it, would it move like this or like this? मतलब A, B और C में से किस पोजीशन में वो मूव करेगा? The particle in front of it. See. ठीक है? So each next particle would move exactly in the same phase, in which the previous particle was vibrating. So when I join them with the line, this imaginary line is known as wavefront. एक तो बिल्कुल easy words में wavefronts is how waves travel across the medium. ठीक है? एक definition तो ये है कि how wave travel across a medium. मतलब हमें if we want to see how waves travel, so they travel in the form of wavefronts. ठीक है? But अगर हम strictly करें कि what is a wavefront, it is a line on which each particle is moving alike to each other. Easy words में ये बोल देते हैं alike to each other. वैसे तो कहते हैं same phase of vibration. उसका मतलब यही होता है they all be having exactly the same motion. Okay? Then a few terminologies that is associated with is first one is wavelength. It is lambda. यूनिट्स उसके मीटर होते हैं. अगर हम एक वेव बनाएं like this, so a wavelength is distance between a crust and a trough. Crust होता है, बल्कि sorry, this line I should color it in a different color. This line, this green one, it is known as the equilibrium line. On this line, each particle, if present on this line, the particle would have zero motion. The part of wave above this is known as crust and below it is known as trough. So one crust and trough makes to give one wavelength. It is a distance traveled by the particle. जैसे हम लोग कहते हैं ना from A to B उसने जाना है, so distance हम normally उसके अंदर लेते हैं. तो let me try and make a bigger wave so that we can discuss all the patterns. ये crust, trough, crust, trough, crust and trough. और ये क्या हुआ? Okay. Now, this height, these red sections are known as amplitudes. An amplitude is defined as the. Well, how do we define amplitude, Hamna? Um, I'm just guessing, but would it be the Why? displacement of a particle from the equilibrium?
line. Yes, maximum displacement of the particle from equilibrium position. Also, remember that we have defined this in the definition of wave that particles only transfer energy, they do not move themselves from position. So whatever the particle is present here, here, and here, they would only vibrate at their fixed position. They would not leave their position to exchange the energy. So the distance between any 2 points, not any consecutive 2 points, if we start from here to here, it is one wavelength. If I start from here and ends here, this is one wavelength. If I start from here to here, this is again one wavelength. I need to be sure, I need to make sure that the 2 points are consecutive, no other point is. For example, if I'm starting from here, this is only half the wavelength. Because ये कहाँ पे जाके खत्म होगा? It will end on this point, not at this point. So this would not be considered as wavelength. He might ask you to identify which one is actually the wavelength. Okay? So the 2 points on the wave, they should be exactly the same. For example, अगर हम crust to crust ले रहे हैं और trough to trough ले रहे हैं और any point in instantaneous displacement ले रहे हैं तो अगली wave में exactly उस point पे जाके हमने stop करना है. So next term that we deal with is time period. Time period is defined. How do we define time period, Hamna? How many wave cycles in a second? No, that is frequency. Time period is to complete one oscillation. And frequency is defined as time period को capital T से denote करते हैं. Its unit is second. Frequency is, we can say, reciprocal of time period, or we could say number of oscillations per second. So if we're saying per second, it means इसका unit क्या होगा हमारे पास? It would be 1/second or hertz. So if we say that these waves have been for 1 second, ये 1 second के अंदर हमने इन waves को observe किया, तो how many waves do we see? 3. 1, 2, and half. तो frequency हमारे पास कितनी बन गई? 1.5 hertz. 2.5. ठीक है. वन वेव, वन कंप्लीट वेव हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलके भी बन सकती है बेटा. मैंने वही बताया आपको. अगर हमारे पास मल्टीपल वेव्स हैं तो ये देखो, ये भी वन वेवलेंथ होती है. इसका टाइम भी वही होगा जो इसका टाइम होगा. ठीक है. अगर वो वेव यहाँ से यहाँ में टाइम लगा, उसका भी टाइम एग्जैक्टली वही निकलेगा, इसका टाइम भी एग्जैक्टली वही निकलेगा, इन दोनों का टाइम भी वही निकलेगा. ठीक है. हम लोग सिंपल पीरियोडिक वेव्स के बारे में बात करते हैं. पीरियोडिक वेव का टर्म हमारी पता नहीं बुक में है कि नहीं है, बट पीरियोडिक वेव इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन होता है एट रेगुलर टाइम इंटरवल. ओके. सो हमने वेवलेंथ के बारे में बात कर लिया. इट्स रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस. हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर लिया. इसका यूनिट भी मीटर्स होता है, इसका यूनिट भी मीटर्स होता है.
हमने टाइम पीरियड के बारे में बात कर लिया, इट्स सेकंड, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लिया, इट्स 1/2 अब रह गया वेव इक्वेशन, v is equals to f lambda. It is basically derived from the equation that we are already familiar with, distance over time. डिस्टेंस को हम यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ से। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कौन दे रहा है, ओनली द वेवलेंथ। एंड 1/टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, अगर आप इसके यूनिट्स देखें तो इसके यूनिट्स भी क्या बनते हैं, स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/सेकंड, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बन गया मीटर्स पर सेकंड। दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ वेव्स, कौन कौन सा था, Mechanical and electromagnetic. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। For mechanical waves, we require a medium, and for electromagnetic, we don't require medium for their movement. These waves required medium, they are medium independent, and examples are, For mechanical, sound waves, and for electromagnetic, light wave. yeah, sound and light. Then the waves are further divided into two sections, and what was That longitudinal wave and transverse। longitudinal waves क्या था, the waves are parallel to the wave yeah, direction. in which particle motion and wave motion is parallel to each other। इसमें पार्टिकल मोशन क्या होगा, साइडवेज, एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव्स भी क्या होगी, they both are parallel to each other। इसमें एग्जांपल हमने क्या डिस्कस की थी, कि if we have a spring attached to one end and we move the spring back and forth, so the particle would move like this and wave would travel in this direction, so they both are parallel to each other. Such a motion of wave is known as longitudinal wave, and the example is sound wave। ट्रांसवर्स वेव में क्या था हमारे पास, एवरीथिंग इज सेम बट पार्टिकल मोशन and wave motion is perpendicular to each other, which means कि इसमें particle कैसे move करेगा, up and down, and wave would move in this direction, so they would be at 90 degrees to each other। इसकी example किस तरीके से है, कि if I have a rope fixed at one end, अगर मैं इसको jerk देता हूँ suddenly, which type of wave would I observe, it would move like this। So particle motion is up and down and wave is traveling in this direction, so they are at 90 degrees to each other। ट्रांसवर्स की एग्जांपल क्या थी हमने, Light. लाइट। Since sound and light are, we are calling them waves, so we can think of it ke they both are just transferring the energy, we're not experiencing any kind of matter traveling around with it, so they are, through these examples we can understand what wave it is। Okay, then there was the last topic, there are three properties which the waves show। First one is reflection। रिफ्लेक्शन में होता है कि जब वेव
hit some solid material, so it travel back in the same medium but opposite direction. लेट्स से इसी वेव की बात कर लेते हैं हम लोग कि rope attached है. इससे after hitting it, it would come back ना in the same medium because it has no other option. This is known as reflection of wave. Echo हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे sound के अंदर. Echo is sound. Echo से you must be familiar when we hear our own sound. If the space is very open, yeah, the room is completely empty, if we say something we hear ourselves back, that's echo. Echo क्यों produce होता है? Because sound reflects back to us. When it comes to wave fronts, तो अगर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हैं, ये मेरा बैरियर है, दिस इज माय बैरियर एंड दीज आर माय वेव फ्रंट्स, दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द बैरियर. इनमें कुछ चेंज आएगा? Would we observe any change in their speed, wavelength or frequency? They all are going to remain same. And why is that? I'm expecting answers from you guys. Why nothing is changing? Because वो it's पता नहीं कहाँ reflecting रखा. back. And I have given you the answer to this as well. कि their medium को change नहीं हो रहा. The medium change नहीं हो रहा. It's coming back to the same medium. तो किसी किस्म की कोई values में change नहीं आएगा. मुझे याद है यहाँ रखा हूँ. Speed change क्यों होती है? Let me give you an example. You're at a beach, you're running towards the water. When you will enter water, would you expect some change in your speed? Yeah. Yes. Similarly, if you're driving a car and some sand comes on the road, there is a portion with sand on it. Would we observe any change in speed? Yeah. And why is that? Because of friction. No, because the medium is changing. So the waves would have any effect on them only if the medium is changing. If the medium is not changing, we would not expect anything different in other. So if a wave is traveling back to the same medium, we would not expect anything. That was the case कि अगर हमारे पास the barrier is exact, what would happen if barrier is at a certain angle to it? ठीक है, वो हमारी wave आएंगी. These are my wave fronts. They would hit the medium and after they would be like this, reflect. अब ये देखो, इसको मैं एक को बनाता हूँ, सिर्फ एक को बना के दिखाता हूँ. ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास नॉर्मल आ गया. ठीक है, इस पॉइंट पे आके उसने हिट किया ना. लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम इन अ डिफरेंट वे. This is my wave. This is how it's traveling towards the surface. The point at which it will meet, we would draw a 90 angle to it. Okay? How would we draw the 90 angle? You must have D in your geometry boxes, which looks something like this. Do you guys have it? Yeah. We would draw a 90 angle. 90 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना? मैं 90 का एंगल ड्रॉ करूंगा. सेंस जब रिफ्लेक्शन होती है ना, जो इंसिडेंट एंगल होता है ना, लेट्स से इट वाज 30 विद रिस्पेक्ट टू 90 एंगल बन रहा है हमारे पास, तो वो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्रीज के एंगल पे ही होगा. That is the property that we're going to study again in
साउंड एंड लाइट, कॉज दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि जिस तरीके से आया है, जिस एंगल पे वो आया है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक एट द सेम एंगल। तो अगर इट इज इंसिडेंटेड एट एन एंगल ऑफ 30, इट वुड रिफ्लेक्ट बैक एट एन एंगल ऑफ 30। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yeah. तो इफ द बैरियर इज स्ट्रेट, तो हम लोग सिर्फ ऐसे बैक एंड फोर्थ एरोस बना देंगे, हम ये वाली डायग्राम बना देंगे। इफ इट इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल, हम उसको ऐसे बना देंगे। बट हाउ डू वी नो हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम? किस तरीके से डेवलप करनी है? लेट्स से कि डायग्राम ऐसे बनी है, बैरियर इज लाइक दिस। जस्ट कीप इन योर माइंड कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना, ना वेवलेंथ को चेंज करना है, ना फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, ना स्पीड को चेंज करना है। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो जो भी आपने रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है ना, मेक श्योर देयर एट 90 डिग्रीज टू द अदर वंस। तो लेट्स से इसका 90 डिग्रीज ये बन जाएगा, ये and यूं इस तरीके से नॉर्मली बना देते हैं, तीन चार लाइंस और बना देते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। मैंने ये रफ बनाने हैं, यहाँ पे कोई एक्यूरेट एंगल्स नहीं बनाने। इफ यू ड्रॉ लाइन दिस, डू यू सी कि ये और ये एग्जैक्टली सेम एंगल्स ही लग रहे हैं फ्रॉम द नॉर्मल? Yeah. ठीक है। बस हमने ये मेक श्योर करना है कि वेव फ्रंट्स की इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज लुक एग्जैक्टली लाइक। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yeah. Then let's do one more. Refraction is a bit, we need a further explanation to that. Let's say diffraction. It has so many pronunciations. Refraction भी कहते हैं, diffraction भी कहते हैं. I'm more comfortable with diffraction. Whatever the pronunciation your teachers tell you, just go on with it. Because eventually, when we are going to write in the paper, they are not going to ask us the pronunciation of anything. ठीक है? So in diffraction, we would observe the only thing we need to keep in our mind is कि if we have an opening in front of a wave, what would we observe? The wave coming out of this opening. How would they look? They kind of spread out. Yes, they would look circular. This bending of wave around obstacle is known as diffraction. The diffraction is maximum when this opening and this distance is equals to each other. क्या मंगवाया? Opening is way too big as compared to the wavelength. So we would say only the edges would be bent, rest of the wavefront would exactly be the straight. अब देखो आप, if you could observe one thing, कि ये मीडियम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मीडियम में कोई डिफरेंस है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पार्ट में? No. बिकॉज हमने सिर्फ एक ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में रखा है, द नेक्स्ट मीडियम एग्जैक्टली द सेम, डेप्थ एवरीथिंग इज गोइंग टू सेम। तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही इन तीनों प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट रहेगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रेक्शन तीनों के अंदर जो वो है ना, क्या कहते हैं, frequency, it's going to remain constant. So diffraction is the bending of the wave around the obstacle or spreading of wave around the geometrical shape of the of it. सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि हमने सिर्फ ये देखना होता है कि if the opening is big as compared to wavelength, we are going to have less circular wavefronts, or if the opening is comparable to that of the wavelength, we are going to have more circular wavefronts. That's the end of today's lecture.